तो कल हमने ये स्लाइड देखा था, कंटेनर इज़ अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू run a piece of software including the code runtime libraries. So like everything is inside a container. Container is designed to be portable, means you can transfer it anywhere, and consistent across environment means आपने कंटेनर के अंदर जो एक बॉक्स पे डाला है और उसी कंटेनर को आप ट्रांसफ़र करते हो तो जो भी वो कंटेनर में वैसे के वैसे ही स्टेट में दूसरे कंप्यूटर पे मिल जाएगा आपको. सो कंटेनर्स आर पोर्टेबल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, चाहे आप इसे किधर भी शिफ्ट कर दो. तो वी जस्ट touched a little bit on virtual machines and containers. We said a virtual machine runs a full operating system on the top of a hypervisor. तो अगर आप virtual machine को देखते हो तो वो कुछ उसका ऐसे कुछ दिखता है, जैसे नीचे फिजिकल मशीन है, उसके पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिख नहीं रहा है बीच में क्योंकि ये हाइपरवाइज़र टाइप 1 है. टाइप 2 में बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, जैसे ऑन द राइट हैंड साइड यू सी ऑन द टॉप ऑफ अ फिजिकल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर. सो इन टाइप 2 either one, there are two types basically. One is it runs on the top of operating system and one which is does not run on the top of operating system. So the hypervisor is mainly responsible to manage all the virtual machines. So wherever you are talking about virtual machine, you are going to talk about virtual machine manager, which is called a hypervisor. ठीक है. तो so in case of VirtualBox, तो Oracle VirtualBox is a hypervisor which can host virtual machines. On the right hand side we are seeing the containers, you can say the architecture. So we have a physical machine, on the top we put operating system which can be Ubuntu or which can be Windows. On the top of this your container engine will be running. So your container engine is actually managing all the containers, just like hypervisor is managing all the virtual machine. Container engine manages all the containers. So on the so here we see three containers: app 1 and some libraries, app 2 and some libraries, app 3 and libraries. So three containers are managed by the container engine. This container engine, the prominent technology that is used in the market is Docker. And another another container tool that one uses is container. It spells as container D as in dog, container D. So it's a process which it's an engine which manages containers. So hypervisors manage virtual machine, that is point 1 I said, and container engine manages containers. In virtual machine you get everything including the entire operating system. This is its main feature, you can say. But in containers, container doesn't have the operating system. So how does a container look like? So let's say if this is a container and below there is a operating system. So the operating system will be, let's say, Windows. So we'll go with Ubuntu for now, Ubuntu operating system, and then your physical machine is under that, right? Your physical machine means SMP. What does that contain? Storage, memory, and processor. So when you are using the underlying physical machine, to create more machines, it is called infrastructure as a service. So this you are using this word. So whenever your containers are created,
that is nothing but infrastructure as a service. As a service you are getting an entire machine. That is why we are getting the entire infrastructure. When we say infrastructure means it includes a machine. So let's say you have Ubuntu operating system, right? And this is installed on a physical machine. So physical machine means it's the entire thing is part of it, right? This is a physical machine. So you install, and also what did I say? The container is executed by whom? Container is executed by container engine. This container engine knows how to talk to Ubuntu. So just take a line I want. So this container engine will talk to Ubuntu over here, and on the top it will manage a container. Now the container doesn't has the entire operating system, but it will have something known as the kernel, OS kernel, which is a very small version of OS. And this is what you don't have to install the entire operating system inside the container. You only need an OS kernel. So this is very important. Now the second thing that is important, the host machine means the physical machine where you are going to install the containers. If this has Ubuntu, then OS kernel also has to be Ubuntu, and this is very important to know. So whatever the host operating system of the host machine is, which is Ubuntu in this case, in that same case OS kernel can be used. The containers cannot contain the OS kernel of a different operating system other than the host operating system. So this is how one machine will look like, and this machine we say it is called a node. So now we will, so this is how Docker manages one container. So if you have another container on the same box, so let's say we have another, so on this, in container 1 you might have a web server running. This is quite possible. Maybe you are running some Python program, some maybe it's Flask program and plus Python. Whatever extra you want to install in this container, that is your choice. But the kernel is as per the host computer. So this is one important thing you have to know. It can come in your interview question. If there is a second container on the same machine, the OS kernel has to be the same. The OS kernel cannot change. In this case, now the container 2 might be having a database, and you might have MySQL file over here, or you might be just having just a some software. So now you see on a single machine we have two containers which are running like two different machines, but on one machine we have web server and the other machine we have database. So keeping these two things separately means what? It means that what is the advantage of separating things or isolating? These are loosely coupled containers. They are not connected exactly. They may be coupled, but they are loosely coupled. Like one is calling the other. This is quite possible because your database must be running inside the other container and your website is running in the other container, and you might be accessing
the website from outside, and you must be hitting this container. So this is, let's say, a user from the outside world who is visiting the website, and the web server is hitting the container, this database. So it is in a separate container. So the isolation helps you to manage different services. When you hear about microservices in future, we are going to say that one microservice is part of one container, and in this microservice, what is this microservice doing? It is giving you a website, and there is another microservice which is giving you a database service. One microservice is independent of the second microservice. If something happens to the second microservice, let's say the process stops, like an application stops, it goes away, it crashes. It doesn't crash the other microservices. Usually in a monolithic application, what is a monolithic application? Monolithic application, the word mono itself means, actually we are trying to solve the monolithic application problem. Usually when you have a machine, you will install a web server on the same box. If you have done this practical anytime in your lab or anywhere, ideally we just don't do any container technology. We just say install Tomcat, install, the web server can be Tomcat, right? Or it can be IIS, and the database can be Yo. This is a monolithic application. Right? If this application fails, if it is very tightly bound to each other on the same box, then the entire application will come down and your web server will stop. So this is an example of a monolithic where all the pieces are in the same environment. They are not separated out. That is what the meaning of is monolithic application. So you will often be told convert a monolithic application into microservices. So when you say monolithic application into microservices, we can say that okay, our web server will be one microservice running inside one container, and MySQL will be running inside another container. So this will be like two different machines. If one container goes down for some reason, the second container will still go on. Okay, so now that you have understood this part, let us go to the, can we draw a bigger diagram? So whenever we say monolithic or microservices, understand what they are trying to do. Microservices is nothing but a broken down version of monolithic application into separate components, so that one component is independent of another component. So now if you see at a Kubernetes, in Kubernetes is usually runs on multi-node. Let me go with a different diagram. So let's say you have your lab and you have multiple computers on the lab. So this is your lab, first 3 computers, first row, right? And then you have another 3 computers, and then you have another 3 computers, and then you have PC's name, right? So PC name can be anything. So this is 1, then this is 2, and this is 3,
and it goes on, right, till 7, and this is 9. They're all connected in the same network, right? Same network. They all have the same software, same operating system, very highly possible, right? This is how the cluster will look like. So what is a cluster? Cluster is a set of computers connected to each other at the same location. So I'm saying set of computers at this same location, same software and same hardware. So this is same location means your lab, right? Your lab is the same location and everybody will have Ubuntu. Either way, everybody will have Ubuntu and everybody will have the same software. Maybe everybody has a web server. So that is what a cluster means basically. Cluster means a set of computers at the same location, same software, same hardware. This is called a cluster. The opposite of cluster is grid, which means set of interconnected computers. In the first case also it is interconnected computers at the different location. We can say at the location, software and hardware which may not be the same. So grid will look like one computer is in India and second computer is in America and the third computer is in London. So where is this location? India. So here Ubuntu might be running. In America, Windows might be running. In London, different version of Ubuntu may be running. But they are all interconnected. When you want to send a rocket to moon, all these computers may be interacting with each other. Because there are different places you want to see the rocket. Everybody has different set of computers, different set of apps, different software, different hardware. It's okay. Till then they can communicate with each other about all the data that they want to share with each other. It is fine. This kind of architecture is called grid, where the location is dispersed out. Your Kubernetes operates in a cluster environment. So this is what is important. It can manage multiple nodes. So this is node 1, right? Node 1 to node 9. Every node will be having what? Yesterday we said we'll have containers. This container OS kernel can be Ubuntu. If there are two containers, the OS kernel should match. But if the node changes, this container 2 can have a different OS kernel if required, if it is running on Windows. So the main important thing is the cluster should have the same location, the computers should be close to each other and they should be interconnected by a fast local area network kind of environment. But usually in your real setting, the operating system won't change. That would not be good for the performance. So it's better to keep the consistent OS kernel across. But let's say you have another computer altogether, another lab. You can go with Windows OS kernel over there. So but the same container can be installed
over there, but using a different OS kernel. You can recreate the entire image using a different kernel. So the containers, so Kubernetes cannot see this container. What Kubernetes can see is pods. So what Kubernetes can see is, it can see cluster, right? It can see, so what all Kubernetes can see? Kubernetes can see a cluster, and cluster will contain pods. Each pod can contain, cluster is what? But set of nodes. Cluster can see nodes, means many nodes, multiple nodes. Each node has multiple pods, means it can be one pod also, but you can have multiple pods also, and each pod has multiple containers. The pod can see the container, but Kubernetes cannot. So whenever you want to start or stop, you have to start or stop a pod, or you want to delete, or you want to move, you want to do anything, you have to do it using pods. You cannot do using containers. Containers you have to put inside the pod. So I hope you all have understood these simple things. Okay, recording is on. Okay. I'm not sure if the recording was stopped, but now API, the master node is consist of scheduler, configuration information, like what does the cluster contain, how many pods are there, how many containers are part of the pod. All this information is stored in etcd, key value store. It's a database, and it has a lot of controllers. Using the controllers, it is managing all the nodes, and whatever activities you want to execute, it is scheduled, like which node you have to install a pod. All sometimes this happens automatically. An API server is the a central server. So there is one server and one scheduler, multiple controllers, and etcd file. And worker nodes, what it will have? It will have kubelets, an agent that ensures containers are running in the pod, and multiple pods could be running on the same node. Kube proxy, as I said, can do the load balancing between the containers in the same pod. The only thing which I am not sure about is whether it can, I think it can also do load balancing between multiple pods on the same node. Okay, but not across multiple nodes. Every node will have a kube proxy which can handle the network between various pods and the various containers within it. And what is container runtime? Container runtime is the engine which is running the container inside the pod.
I already said what is a microservice. So what is the advantage of microservice? You can scale the microservice. When I said I am creating a duplicate copy of the website, I am creating a duplicate copy of the microservice. So microservice and Kubernetes go hand in hand. They both are meant to serve the same goals. That to be able to manage the the development of the code. So if there are two different microservices, they both don't have to be installed together. They can be installed separately. They can be scaled separately. They can work together, but something happening to one or some work that you do on one microservice does not affect the other microservices. So I hope you all have understood this part. I think a lot of recording was paused, so you must have, a lot of recording is gone. Anyways, लेट्स सी और मैं क्या कर सकता हूँ अभी. तो मेरे पास एक वर्चुअल बॉक्स है इधर. सो लेट्स स्टार्ट द वर्चुअल बॉक्स. थोड़ा कंप्यूटर स्लो हो सकता है. करेक्ट. डॉकर इज नथिंग बट अ कंटेनर. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट डॉकर के अंदर कंटेनर मैनेज करने के लिए कंटेनर इंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये याद रखना. तो ये मैंने एक वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है. उसमें मैंने क्यूबरनेट्स इंस्टॉल किया है. बट दिस वर्जन ऑफ क्यूबरनेट्स कैन रन ऑन सिंगल प्रोसेसर. आपका नॉर्मल क्यूबरनेट्स एक प्रोसेसर पे रन नहीं होता है. उस आपको कम से कम 2 प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी. एक ड्यूल कोर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी. बहुत टाइम लगा रहा है. आपका वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने वर्चुअल मशीन डाला है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे वर्चुअल मशीन है. अलग अलग मशीन नहीं है. और ये जो सबसे नीचे दिखता है आपको, वो है क्यूबरनेट्स. तो आप भी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके मेरा मशीन लेके उसके अंदर यूबंटू डाला है वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर ये चल रहा है. ठीक है. तो अभी देख सकते हैं क्या मैं दिखा सकता हूँ. अनफॉर्चुनेटली इतने सब चीज़ चल रही तो बहुत स्लो हो रहा है. दिखाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है. Okay, what I wanted to see was recording. ठीक है.
So this is my Ubuntu box, and this is how the Docker file will look like. Now we are going to try to open it. तो इसमें मैंने 3 कमांड डाला है फ्रॉम ubuntu :2022.04। ये कमांड क्या करता है, बेसिकली दिस इज़ योर इंस्टॉलेशन फाइल। ये फाइल से आपका कंटेनर क्रिएट होएगा और जो इंस्ट्रक्शंस आपको कंटेनर जो कंटेनर के अंदर चाहिए वो इसके अंदर लिख के देना पड़ेगा आपको। यू हैव टू राइट ऑल द कमांड्स व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल। सो व्हाट आई एम सेइंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुझे चाहिए, जो कर्नल चाहिए मुझे, वो ये बॉक्स का होगा फ्रॉम ubuntu 22.04 वर्जन। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही वो कर्नल डाल दिया आपने, तो अब एक कमांड रन करना, अपडेट कमांड, apt-get अपडेट इंस्टॉल कर्ल। सो आई एम इंस्टॉलिंग अ कर्ल यूटिलिटी। इट इज़ लाइक इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। हमारे केस में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है वो है कर्ल। और मैं एक कमांड दे रहा हूँ कि आप स्लीप मोड में जाओ, इन्फिनिटी, आप जिंदा रहो लेकिन स्लीप मोड में रहो ताकि कंप्यूटर का टाइम बचे। तो ये हो गया डॉकर फाइल आपका क्रिएट। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए पहले आपको एक डॉकर फाइल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और आपको बिल्ड करना पड़ता है डॉकर फाइल, जैसे कंपाइल करते हो जावा प्रोग्राम तो वो करना पड़ता है। तो मैंने एक इंस्टॉलेशन फाइल क्रिएट किया है और वो फाइल में मैंने बोला है कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर आपको उस कंटेनर में वेबसाइट चाहिए तो वेब सर्वर, वेबसाइट, आपके जो भी वेबसाइट है वो पूरे आप इंस्ट्रक्शंस में आप दे सकते हो। तो हाउ टू क्रिएट अ डॉकर फाइल, उसके क्या क्या कमांड्स हो सकते हैं, वो आपको डॉकर कमांड्स का एक ट्यूटोरियल अलग सा लेना पड़ेगा। बट मैंने एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप ओएस कर्नल आप कैसे यू सॉरी मैं क्या कर्नल, तो इसमें एलएस करूँगा तो लिस्ट आएगा। बीच में आ रहा है, इसको हाइड कर सकते हैं। एलएस करूँगा तो मेरा वो डॉकर फाइल इधर है, ठीक है। तो इसको कमांड से याद रखेगा क्या, अरे तो व्हाट इज़ दिस कमांड डूइंग। तो मैं अभी थोड़ा शायद फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा।
docker space build dash t, and what is the name of my container, और यू कैन से इमेज फाइल. ओके, व्हेन आई से इमेज फाइल मतलब हर कंटेनर का एक इमेज, एक फाइल बनती है, उसको इमेज फाइल बोलते हैं हम. कंटेनर इमेज फाइल. इमेजेस आर नथिंग बट द फाइल दैट रिप्रेजेंट्स द कंटेनर. जो भी आपका कंटेनर का सॉफ्टवेयर है वो पूरा एक ही फाइल में स्टोर होता है और उसको बोलते हैं इमेज फाइल. वो ये डॉट क्या करेगा कि करंट फोल्डर से बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डॉकर फाइल उठाएगा. इफ़ यू हैव, आपने कुछ अलग नाम दिया डॉकर फाइल का तो आपको बताना पड़ेगा. अगर नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली डॉकर फाइल उठा देगा. और जो डॉकर फाइल में है वो क्या करेगा, वो इंस्टॉल करेगा यूबंटू, कर्ल यूटिलिटी भी इंस्टॉल करेगा साथ में, और उसको स्लीप मोड में डालेगा. तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ अभी. बिल्डिंग टाइम पता नहीं, ऑलरेडी मैंने एक बार बिल्ड किया है. सो हाउ मच टाइम विल इट टेक आई डोंट नो, बिकॉज द कंप्यूटर इज़ वेरी स्लो. बहुत सारी चीज़ चल रही है. तो ये बिल्ड क्या करता है, वो यूबंटू को इंटरनेट से उठाने की कोशिश करेगा. तो वो इंटरनेट, वो जगह जो जिधर से वो खींचता है उसे बोलते हैं रजिस्ट्री. अभी मैं टाइप करके नहीं बता रहा हूँ आपको. और वो क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर लिया है तो सेकेंड टाइम गया नहीं. उसने वर्जन देखा, हाँ ये वर्जन बराबर है मेरे पास, तो उसने डाउनलोड किया नहीं. फटाक से उसका काम खत्म. एक्चुअली ये टाइम लगता है थोड़ा, लाइक इट टेक्स अराउंड 3-4 मिनट्स और 2 मिनट्स टू कंप्लीट. कर्ल यूटिलिटी ये सब 3-4 मिनट तो जाता ही है. बट इस केस में इतना गया नहीं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी बिल्ड द फाइल. अभी ये आपका जो इमेज बिल्ड हो गया, इस ये आपने क्या बिल्ड किया, इसको इमेज फाइल, कंटेनर इमेज फाइल. अगर आपको पता करना है कि आपने क्या क्या इमेज बिल्ड किया है, कौन से कंटेनर इमेजेस क्रिएट किया है, तो कमांड होना चाहिए डॉकर स्पेस इमेजेस. तो डॉकर स्पेस इमेज मुझे 2 इमेज बता रहा है. एक तो मैंने जो अभी क्रिएट किया, जेम्स एंड डैश यूबंटू कर्ल, और दूसरा यूबंटू, और एक तो मैंने 6 महीने पहले क्रिएट किया और ये 2 घंटा पहले मैंने क्रिएट किया है. जो सेम उसने किया, उसने कुछ अपडेट नहीं किया. अगर ये नया पीस रहता तो टाइम लगता था. अभी एक बार डॉकर इमेज क्रिएट किया तो मतलब आपने कंटेनर का इमेज क्रिएट किया. अभी वो कंटेनर को आप इंस्टॉल कर सकते हो पॉड के अंदर. तो उसके लिए मैंने जो गेट पॉड्स बोलता हूँ, क्यूब ctl गेट पॉड्स. अरे ये टेना क्यों दे रहा है. सूडो कमांड से इसको क्या, ठीक है. तो मुझे 3 पॉड्स दिख रहे और वो एक पॉड के अंदर मेरा कंटेनर चालू है. तो मैंने कंटेनर के अंदर, मैंने अभी आपको ये नहीं दिखाया, मैंने बस आपको कंटेनर दिखाया और सीधा पॉड दिखाया मैंने. लेकिन पॉड के अंदर कंटेनर डालते कैसे, तो यही बात है. तो उसके लिए आपको एक दूसरा फाइल लिखना पड़ेगा जो YAML फॉर्मेट में होगा. एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको बताना है कि ये मेरे कंटेनर है और ये कंटेनर का इमेज का नाम ये है. तो पहले आपको इमेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद वो इमेज को आपको पॉड के अंदर डालने के लिए बोलना पड़ेगा. तो पॉड का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे दिखता है, जैसे काइंड इज इक्वल टू
पॉड, और पॉड का नाम क्या होगा, ubuntu curl pod, और उसके अंदर जो कंटेनर है उसका नाम क्या होगा, ubuntu curl कंटेनर। ये नाम आप खुद कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इमेज किसका उठाएगा, इमेज ये डॉकर का इमेज जो मैंने क्रिएट किया है इसको उठाएगा। आप क्या बोलना चाहते हो कि ये इमेज को उठा के एक कंटेनर बनाओ और ये कंटेनर के अंदर एक पॉड में डालो और वो पॉड मुझे आगे जाके क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इमेज मैं ही क्रिएट करूँ। रेडीमेड इमेज आपको रजिस्ट्री में मिलेगा, डॉकर रजिस्ट्री में मिलेगा, आपको AWS पे जाओगे तो इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में मिलेगा। व्हाट इज़ दिस रजिस्ट्री कंटेन्स बट नथिंग बट अ set of container images where it is ready made, you don't have to install anything, ये सब पैक करके रखा है इमेज, बस इमेज को आप पॉड के अंदर डाल दो और अपना काम चालू करो। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉड मैंने pod.yaml फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। मैंने पॉड का नाम बताया है, एक नाम दे दिया, जो भी कुछ भी नाम हो सकता है। उसके अंदर कंटेनर का नाम दिया है, कुछ भी कंटेनर हो सकता है, और उसके अंदर मैंने एक इमेज डाला है, वो भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि इसमें 2 कंटेनर्स मैंने डाले, मतलब एक ही पॉड के अंदर 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैंने कुछ नेटवर्क रूल्स भी डाले। तो मैं कितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। 2 कंटेनर, एक के अंदर वेबसाइट है, दूसरे के अंदर डेटाबेस है, दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है। तो ये सब मैं कॉन्फ़िगरेशन ये फाइल में बता सकता हूँ कि मेरा पॉड चलने कैसे चलने वाला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, हाउ टू क्रिएट अ पॉड यूजिंग दिस फाइल। तो अभी पॉड तो चल रहा है इधर, लेकिन मैंने पॉड को डाला कैसे अंदर, तो डालने का जो कमांड है वो अभी ढूंढते हैं। तो बहुत सारे चीज़ मैंने पहले बार किया है, आज ही पहले बार क्यूबरनेट्स चला है मैंने, पहले बार पॉड्स क्रिएट किया है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट इन अ वेरी तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे पहले मुझे क्लियर कर देना दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर मुझे पॉड डिलीट करना हो मेरे नोड पे, तो मैं ये कमांड दे सकता हूँ, kubectl डिलीट। मैंने बोला था kubectl मैनेजेस पॉड्स, तो देखो मैं इधर बोल रहा हूँ kubectl टूल है डिलीट पॉड है मेरा पॉड का नाम, यही पॉड मैंने क्रिएट किया था, तो अभी मैं डिलीट कर दूंगा जानबूझ के। अच्छा, परमिशन मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन मोड में नहीं हूँ, इसीलिए सूडो मोड में जाना पड़ेगा फिर से। तो मैं पॉड को डिलीट कर रहा हूँ मेरे नोड पे। अभी जस्ट रिमेंबर कि मैं सिंगल नोड क्यूबरनेट्स चला रहा हूँ, मल्टी नोड्स नहीं, क्योंकि एक ही बॉक्स है, एक ही प्रोसेसर है। तो आई एम यूजिंग अ टूल कॉल K3s। नॉर्मल क्यूबरनेट्स चलता नहीं है सिंगल प्रोसेसर पे, तो मैंने एक टूल यूज़ किया है K3s जो सिमुलेशन है क्यूबरनेट्स का। पॉड डिलीट तो हो गया है, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है, तो Ctrl+C करके बाहर आ जाओ, ठीक है। तो अगर मैं अभी गेट पॉड्स करूं और पॉड डिलीट हो चुका है, तो पॉड नहीं रहना चाहिए। गेट पॉड्स sudo kubectl स्पेस गेट पॉड्स,
तो मेरा बॉट्स गायब हो गया। ये जो एन जी है आइंग से, ये अलग बॉट्स है जो मैंने अलग से इंस्टॉल किया था। तो अब देख लो मैंने पॉड डिलीट किया है। तो अभी मैं पॉड इंस्टॉल करूँगा, और पॉड इंस्टॉल करने के लिए मुझे वो फाइल की ज़रूरत है, पॉड डॉट वाई एम एल जो फाइल जो भी मैंने लिखा है, कि मैंने बताया कि ये कंटेनर को उड़ा के किधर गया। तो हाँ, फिर से मुझे क्लियर करने दो, बहुत सारी चीज़ आती है स्क्रीन पे। ये get pod, delete pod, clear. What I'm searching for is the apply command. इधर है apply command. ये इसी मैंने, आप देख रहे हो कि pod और YML फाइल मैंने क्रिएट किया, उसमें बताया मैंने कौन सा कंटेनर इमेज मुझे डालना है, और मैं बोल रहा हूँ ये इसको अप्लाई करके इसे इंस्टॉल कर दो। और इस तरह ये pod, if everything works fine, everything is okay, it will install the, अच्छा ये फिर से डिनाई बोल रहा है, sudo command. Sudo means like a administrator, okay? If you have non, this is part of Linux, you are running as a administrator with more rights. So it is saying it has created a pod, within that pod it has created a container. तो अभी मैं get pods करूँ, तो मेरा pods दिखना चाहिए मुझे, and it is in running status. If you notice, my pod has been created over here, the third row, and 101 means एक कॉपी है, and it is in running status. अभी मैंने कर्ल यूटिलिटी उसमें इंस्टॉल किया था, तो मैं कर्ल कमांड को फायर करूँगा देखने के लिए कि कैन आई, तो मैं पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर जाके वो कमांड एग्जीक्यूट करूँगा इधर से, बाहर से। तो फिर से मुझे क्लियर करने दो स्क्रीन। What I am looking for is exec command. I want to execute a command. So here I am saying kubectl execute a command within which pod you want to curl pod and start the bash. सॉरी, फिर से परमिशन का प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। तो उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया, जैसे कुछ भी कमांड फायर करने का। अभी मैं पॉड के अंदर हूँ, एक मिनट रुक जाऊँ। तो अभी मैं जो कमांड रन करूँगा वो कंटेनर के अंदर जाके रन हो जाएगा। कर्ल अगर यूटिलिटी है तो मिलेगा उसे, तो मैं बोलूँगा curl is like almost like saying go to that URL, C URL, which URL I want to go to, let's say https:, एक http रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं कंटेनर के अंदर से एक वेबसाइट पे, curl to which website, like go to which URL,
आई विल से example.com. वेबसाइट कुछ भी हो सकता था, लेकिन आई चोज दिस वेबसाइट बिकॉज इट इज़ यूज टू टेस्ट. तो आप देख सकते हो मुझे एक आउटपुट मिला कि HTML फाइल मिला उधर से, इधर लिखा दिस डोमेन इज़ फॉर यूज़. तो ये example.com पे जाके कंटेनर के अंदर से वो कमांड फायर हुआ है और मैंने बाहर से फायर किया कि उसे वो वेबसाइट पे जाके उसका डेटा ले लो, कल यूटिलिटी. तो ये बॉक्स कंटेनर के अंदर एक वेबसाइट भी रन हो सकता था और मैं वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो कंटेनर किसी IP एड्रेस और पोर्ट पे रन होगा. तो this was a very simple demo where I created a container using a file. Then I built the container image. Then I took the container image and I mentioned it in my pod.yml file. Then I took that pod.yml file and I used the kubectl tool to install it within the Kubernetes cluster, which in this case the Kubernetes cluster is managed by K3s. So I created my container over there, and then I tested my container whether I verified whether my container is in running state, and once it is in running state I try to run something inside the container, so anything that I have installed. In my case curl utility was installed, so I connected to that curl utility and I visited the example.com website and I got the output. ये मशीन अभी वर्चुअल मशीन बंद हो रहा है, इसको बंद होने दो.